How are you all? Sir, fine. Sir, good. Shubham Pratap has joined the meeting and now he will leave just after 1 minute. शुभम प्रताप बेटा जरा वीडियो ऑन करना आई वांट टू सी योर फेस मैंने बहुत सालों से तुम्हारी शक्ल नहीं देखी है Morning, sir. कैसे हैं Sir, हाउ आर यू शुभम sir. जी Yes, sir. हाउ आर यू Sir, fine. क्लास अटेंड नहीं करते हो तुम अटेंडेंस लगा के गायब हो जाते हो बस व्हाट्सएप पे अटेंडेंस लगाई हो क्लास में आई ये क्या चक्कर है सर अभी कुछ दिन से सब फीवर चल रहा था 14 डेज से फीवर था मेरे को ओहो अब ठीक हो नाउ आर यू फाइन वो मेरा सर स्पेक्स भी टूट गया था तो नया बनवाया तो अभी फोन चलाया है आर यू फाइन नाउ यस सर वेरी गुड बट कम से कम व्हेन यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लास तो व्हाट्सएप पे अटेंडेंस भी तो नहीं लगानी चाहिए ओके मार्किंग योरसेल्फ प्रेजेंट सर इन मैंने तो कई टाइम से अटेंडेंस ही नहीं लगाई है नहीं बेटा मैं तुम्हें दिखा दूंगा you have marked yourself present on WhatsApp ओके सर and then you have not attended the class Sir, I have to ask something. yes Natik Sir, in the section 7th A, you have started the new chapter percentage. 7C not 7th A in 7C we started percentage not in 7th A 7C में चल रहा है इसमें okay 7th A में we have not finished the chapter क्या नाम है उसका Sir, today will be finished. triangles properties of triangles चल रहा है अभी तो chapter 15 open it all of you chapter 15 सर वी हैव last टू डू exercise क्वेश्चन नंबर 11 last exercise is left some questions are left question 11 we have to do today यस सर exercise 15D question number 11 okay so in the question it is given that there is a tree on a ground this is your ground suppose and this is your tree ये ट्री है okay पेड़ खड़ा हुआ है ग्राउंड के ऊपर व्हाट हैपेंड ये ट्री जो है यहाँ से कहीं से मान लीजिए ब्रेक हो गया 9 meter so the tree breaks at a point which is tree breaks from a point where the point is at a height of 9 meter from the ground से 9 meter ऊंचे point पर ट्री यहाँ से ब्रेक हो गया ब्रेक होने के बाद ट्री जो है वो ग्राउंड पर ऑब्वियसली फॉल हो जाएगा it will fall on the ground in this direction like this it will fall on the ground am I right or not the tree will fall on the ground but पूरी तरीके से ब्रेक नहीं हुआ थोड़ा सा पार्ट उसका यहाँ पे चिपका रह गया ऐसा आपने देखा भी होगा कई बार so this is after falling on the ground in this direction the tree falls on the ground and now it is leaning on the ground like this the upper part of the tree which has fallen is now leaning on the ground like this okay so now this is the top of the tree am I right or not this point is the top of the tree and this is the foot of the tree so the distance between the top and the foot of the tree is given how much 12 meter am I right 12 meter दिया होगा
Yes, sir. Yes, 12 meter दिया है. The distance between the top of the tree and the foot of the tree is now 12 meters. Okay. तो ये points को मैं mark कर लेता हूँ. Let us take this point as A, this point as B, and this as C. And Sir, we have to draw this figure. yes, you have to draw the figure. तो आपको क्या करना है? You have to find the total height of the tree. Total height कैसे मिलेगी? If I somehow find the value of AC, AC की वैल्यू निकाल लेता हूँ. मान लो x है, जो भी I वैल्यू है AC, मान लीजिए x आ जाती है. So the distance AC is also equal to the distance AD. दोनों x होंगी. यही वाला पार्ट यहाँ पे टूट के यहाँ पे गिर गया. तो ये जो डिस्टेंस है AC, that is also equal to distance AD. यही वाला पार्ट टूट के गिरा. So if I find x, then can I find the total height of the tree? X की वैल्यू जो भी आएगी उसको मैं AB 9 Sir. मीटर कर दूंगा and I will get the total height of the tree. Okay, उसमें 9 मीटर ऐड कर देंगे. सर इक्वेशन क्या होगी सर बताओ. नहीं बेटा, wait. Have you all understood what is the question? कैसे करना है अब यहाँ पर? Sir, Let please. us first find AC. Sir, please. Now BC square is equal to AC square plus BC square. AB square, AB. AC square is equal to AB square plus BC square. Pythagoras theorem. No. Pythagoras theorem. Write it in full form. AC square Some मतलब. right L height of the tree. Yes. What is the total height of the tree? The 15 meter. 15 meter is not the height of the tree. 15 meter वो वाला पार्ट है जो टूट के गिरा है. Total height कितनी आएगी? So the total height is 24 meter. 24 meter आ जाएगी. 15 plus 9, 24. So AB distance is 9 square. BC is 12 square. X square is equals to 81 plus 144. X square is equals to 225. X is equals to square root of 225. That means X is equals to 15 meters. X की वैल्यू आ गई 15 मीटर. बताइए. उसके बाद now you find the total height of the tree. Total height क्या हो गई? Total height of the tree is equals to 15 plus 9, 24 meters. 24 meter is the total height of the tree. Understood, all of you? Sir, please explain me the figure. बेटा इसमें ये ट्री है आपका. यहाँ पर विंड की वजह से पॉइंट ए से ब्रेक हो गया और ब्रेक होने के बाद इस तरीके से ग्राउंड पर गिर गया. The upper part is now leaning on the ground like this. तो ये टूट के आपको यहाँ पे गिर गया. Now you have to find the total height of the tree. The point from where the tree breaks is 9 meter. A point जो है आपका वो 9 meter दिया हुआ. It is at a distance of 9 meter from the ground. And the distance between the top of the tree. So with the help of Pythagoras theorem, you will find the distance AC. AC distance हमने निकाल लिया. X आ गई आपको 15 मीटर using Pythagoras. Now यही वाला पार्ट जो टूट के गिरा था वो आपका ये 15 मीटर हो गया. This AD की लेंथ आ गई 15 मीटर्स. और AD में अगर मैं AB और ऐड करूंगा 9 plus 15, I will get the total height of the tree. 9 plus 15 कितना आ गया? 24 meters. This is the question. एरो D के पास जो एरो है ये सर ये दिखा रहा है this arrow shows that the tree has fallen on the ground. यहाँ से ब्रेक होके बीच में टूट गया. Sir. ब्रेक होके ग्राउंड पे गिर गया. Okay, it is showing that the tree has fallen on the ground. Sir, my one doubt. Yes. I have one doubt. Yes. Sir, you write
equation AC square is equal to AB square plus BC square. Sir, my opinion is AB square is equal to AC square plus BC square. नहीं बेटा, हाइपोटेन्यूज Because sir, AB is equal 12 तो 12 उससे क्या meter, मतलब sir. है बेटा, AB उससे square. क्या मतलब है? What is the hypotenuse of the triangle? Tell me the length of hypotenuse. हाइपोटेन्यूज कौन सी है यहाँ पर? AC है या AB है? कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज है? हाँ? Sir, AC. AC is the hypotenuse. फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज Side इक्वल of opposite side sum of of base and height. hypotenuse square is equal to sum of the squares of sum of the squares of the other two sides. तो AC आएगा यहाँ पर. AC square is equal to AB square plus Okay, BC sir. square. Understood? Okay, sir. Question 12. Have you all done this? Question 11. Yes, sir. Yes, sir. Question number 12. In question 12, it is given that there are two poles. दोनों ground पे straight खड़े हैं. This is the first pole, and this is your second pole. Both the poles are standing straight on the ground. Okay, the height of the first pole, पहले pole को नाम दे देते हैं AB, and second pole is CD. The height of the first pole is given 18 meters. 12 मीटर इसकी height है. And the height of the second pole is given 13 meters. Okay. And the distance between the foot of the two poles, this is given 12 meters. दोनों poles के foot के बीच में जो distance है, that is given 12 meters. आपसे पूछ रहे हैं, what is the distance between their tops? दोनों poles के top के बीच में क्या distance होगा? यानी कि AC आपको निकालना है. तो AC को मैं X लगा देता हूँ यहाँ पर. This is what you have to find out. The distance between their tops. ठीक है? आ जाइए Keep your mind. आ जाइए The distance BD is 12 meters. आपको distance AC find करना है. क्या AC distance भी 12 होगा? Answer है no, because AC distance is not parallel to BD. BD के parallel नहीं है, equal नहीं है BD के, different होगा कुछ. ठीक है? So let's find how to do it. So first of all, to do this question, you will draw a perpendicular from C on AB. C से एक imaginary line draw कर देंगे AB के ऊपर. ये इस तरीके से डॉटेड बना लीजिए. ठीक है. So take this point as point को E ले लीजिए. Okay. So to find X, we can see that triangle AEC is a right angle triangle. Triangle AC क्या है? AEC is a right angle triangle.
if we somehow find the value of EC and AE, EC और AE की वैल्यू अगर हमें पता चल रहा है, then we will easily find the value of AC. AC निकाल लेंगे. तो दो बातें हैं, अगर EC और AE की वैल्यू हमें पता चल रहा है, the measure of EC and AE, we can easily find AC. Okay. Now how to find the length EC? EC length is equal to BD. EC is equal to BD. So EC is equal to 12 meters because the two sides are parallel. These are parallel lines, and the distance, perpendicular distance between two parallel lines is always equal. So EC की distance 12 मीटर होगी, यही होगी 12 आपकी, ठीक है, BD के equal है 12 meters, and so EC is 12 and CD is 13, तो BE की लेंथ भी क्या आ जाएगी आपकी 13 आ जाएगी. This distance BD, this is also 13 meters, ये भी 13 है. BE, the distance BE is also 13 meters because CD is 13, ये भी 13 हो जाएगी. Now how will you find the distance AE? AE कैसे निकालेंगे? AE के लिए मैं क्या करता हूँ, AB minus BE. If I subtract BE from AB, I can find the distance AE. So AE is equal to AB 18 minus BE, which is 13. 18 minus 13. So this gives you 5 meters. AE distance आ गई आपकी 5. So I am writing 5 here. AE distance आ गई 5. कैसे निकाला AE? इस पूरे में से AB में से EB माइनस कर दिया. 18 minus 13 कितना बचा 5. ओके, तो 5 मीटर आपकी डिस्टेंस आ गई AE. Now in the triangle AEC, we know the length of AE, which is 5. We know the length of EC, which is 12. Can we find the length AC? Yes, very easily we can find it. So AC निकाल लेते हैं. कैसे निकालेंगे देखिए, in triangle AEC, which side is the hypotenuse? कौन सी side है hypotenuse? Sir, x is equals to 13. Yes, correct. AC square is equal to AE square plus CE square. CE या EC कुछ भी बुला दो इसे, कोई फर्क नहीं पड़ता. AC square plus EC square, sorry, AE square plus EC square. AC is x, AE is 5, EC is 12. So x square is equal to 25 plus 144. X square is equals to 169. That means x is equals to square root of 169. Square root of 169 कितना होता है 13 meters. आ गई हमें AC distance निकालनी थी, आ गई 13 meters. Sir, I have one doubt. Yes. Sir, please explain. AE is equal to AB minus BE. Sir, how is it? बेटा देखो, can you tell me what is the length of BE? BE की लेंथ कितनी है? Sir, BE length 8. हाँ? BE length कितना है? BE is 13 meters. 13 meters. Okay. And AB Okay. length is 18. ये पूरा Yes, sir. 18 है, इसमें से इतना पार्ट 13 है, तो बचा हुआ पार्ट कैसे निकालेंगे आप? AB में से 13 माइनस कर देंगे. 18 माइनस 13 कितना बचा? 5. Got it? 18 minus 13 is 5 meter. Clear? Nothing. Understood? Nothing, beta. Understood? Not responding. चलिए, let's move on to the next question.
13th one. So in the 13th question, there are some directions given. Directions, I hope you all know how to mark the directions. North, east, west, south. कैसे mark करते हैं? Path. North, south, east, west. Yes, sir. So very easy. On the left side, it is west. Right, it is east. Upward direction is north, and downward is south. Okay. So a man started from a point. Let us take that he assume that he started from point A and he goes in the west direction. 35 meters he goes in the west direction. How much? 35 meters. So let us take he goes to point B, which is 35 meters from point A. Point A से west direction में गया है. West की direction में गया है. कितना गया? 35 meters. So after reaching to point B, he goes to the direction north. North direction में चला गया. B से north में गया. देखिए नॉर्थ डायरेक्शन में गया. कितने मीटर गया? 12 meters. 12 meters in the north direction. मान लो C पॉइंट पे पहुंच गया वो. C B से पहले B पे गया. B is in west. फिर B से गया नॉर्थ डायरेक्शन में. नॉर्थ मतलब अपवर्ड डायरेक्शन. कितना? 12 meters. And let us assume that he reaches point 3. Now you have to find what is his position, original position. What is the distance between his original position and the starting position? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? डायरेक्ट अगर डायरेक्ट डिस्टेंस की बात The करें तो distance is 37 meters. yes, so this distance AC you have to find out. Let us assume that AC is x. AC की वैल्यू निकालनी है. So we all know that triangle ABC is a right triangle. Right triangle है ABC. AC is the hypotenuse. So AC square is equal to BC square plus AB square. Pythagoras theorem. X square is equal to BC square मतलब 12 square. AB square मतलब 35 square. X square is equal to 144 plus 1225. X is equal to square root of what is the sum of 144 and 1225? 9631. 1369. Square root of 1369 is 37. So 37 meter is your answer. कैसे निकालेंगे 1369 का स्क्वायर रूट? You will do the prime factors of 1369. 1369 is a number which is straight away divisible by 37. किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा. It is only divisible by 37. 1 से तो होगा ही obviously. 1 को छोड़ के किससे डिवाइड होगा? 37 से. तो 37 से डिवाइड करेंगे 37 आएगा. And then again divide by 37 you get 1. So there is a pair of 37. इसलिए you will write 37 only one time. So the square root of 1369 is 37 meters. Answer is 37 meters. Clear? Very easy, simple question, straightforward question.
Done, all of you. 14th one is exactly same. So I am giving you 14th one in homework. 14th is your homework. Question 15 पे आ Okay, जाते हैं. sir. Okay. Dhruv Kumar has done the 14th one also. He has given the correct answer. 5 kilometers. Question number 15. Question 15 says, find the length of diagonal of a rectangle whose sides are 16 and 12. Very easy question. So there is a rectangle. Rectangle में क्या खास बात होती है बताएगा कोई? Opposite sides are equal and all the angles are of 90 degrees each. मालूम है आपको? नहीं मालूम है? In a rectangle, all the angles are of 90 degrees. मालूम है. यही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी. Okay, so it is given that the length of the rectangle is 16 centimeters, breadth is 12 centimeters. आपसे पूछ रहे हैं diagonal AC की length क्या होगी? Diagonal की length पूछ रहे हैं. So we know that angle B is equals to 90 degrees. All angles are 90 degrees each. Rectangle में So we can angles. So we can directly write angle property of rectangle. नहीं. And all angles, you have to mention this. All angles of a rectangle are 90 degrees each. Okay. ऐसे लिखेंगे. Triangle B is 90. Therefore, in triangle ABC, you can use Pythagoras theorem. In triangle ABC, AC square is equal to BC square plus AB square. Pythagoras theorem. Write down the reason. Pythagoras. AC मान लो x है, यही निकालना है हमें. x square, BC square 12 square, AB square 16 square. So x square is equals to 144 plus 256. X square is equals to 400. X is equals X equals to 20. Square root of 400, which is equals to 20 centimeters. 400 का square root क्या होता है? 20. Do you all know how to find the square root of 400? 400 के factors कर लीजिए. उसमें जो numbers दो बार आएंगे उनको एक बार लिख के multiply कर दीजिए. Sir. जी. Sir, how we have taken the x in the inside of the triangle, वो rectangle? बेटा, this is the length AC. AC को मैंने x मान लिया है. The length AC is x. ये माना है. Okay.
assume earlier that the length AC is equal to X. Okay. Okay, sir. Do it in your copies, all of you. Sir, please wait. Yes. Sir, done. Very good. Sir, now which question we have to do? Sir, done. Question number Sir, done. 16. Sir, done. Try question 16, all of you. It is very similar to this one. मैं करूं क्या? So in question 16, there is a slight difference in the question. बहुत छोटा सा difference है. Find the perimeter of a rectangle whose length is 40 centimeter and diagonal is 41 centimeter. The diagonal is given 41 centimeters. This is given. Length is given 40 centimeters. आपको इस rectangle का perimeter पूछना है क्या होगा? Perimeter बताने के लिए you all must know the breadth. लेंथ तो हमको पता है, ब्रेथ हमें चाहिए. ब्रेथ हमें पता लगाने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी. पेरीमीटर क्या होता है? फॉर्मूला 2l + b. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर. यानी कि b ब्रेथ हमको पता होना चाहिए. ब्रेथ इज नॉट गिवन, सो लेट अस फाइंड द ब्रेथ bc. कैसे निकालेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन द ट्रायंगल abc. ac² = ab² + bc².
इस बार BC की लेंथ हम x लगा लेते हैं. AC square is equal to 41 square. 41 square 40 square plus BC square. BC की जगह x square. Okay. 1681 minus 1600. 41 का स्क्वायर होता है 1681. 40 स्क्वायर इज 1600. यानी कि 81 is equal to x square. X is equals to square root of 81. That means 9 centimeter आ गई आपकी breadth. Breadth आ गई 9 centimeters. Now you can find the perimeter of the rectangle. Find the perimeter. Sir? Perimeter is equal to 2L plus B. So 2 into 40 plus 9. Perimeter is equals to 2 into 49. That means perimeter is equals to 98 centimeters. Okay, 98 centimeters. This is the perimeter. Understood, all of you? बहुत सिंपल है. You find the breadth using Pythagoras. 9 centimeter आ गए. Pythagoras से हमने breadth निकाल ली. BC is the breadth. 9 centimeter निकाल ली. Then find the perimeter. 2L plus B formula use करिए. Perimeter निकाल लीजिए. 98 centimeters आ गए. सर फॉर्मूला निकल जाएगा सर. जी क्या चीज बेटा? सर सॉरी बेटा समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो. So now I'm clear, sir. Clear? Yes, sir. Now, sir, it's clear. So there is a network problem from morning. Okay, so have you all done? नहीं करा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट. Yes, मीटिंग में sir. जवाब नहीं करा है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. सर ले लिया मैंने कर भी लिया. Okay, very good, very good. Sir, ले लिया